The difference between two positive numbers is 10 and the ratio between them is 5:3. Find the product of two numbers. The difference between two numbers is 10 and the ratio between them is 5:3. Find the product of two numbers. So suppose two numbers are x and y. X minus y is 2. So this is greater number, this is smaller number. And the ratio is 5:3. So can I say one number is 5x, another number is 3x, and इनका जो difference है 5x minus 3x वो 2 है. So 2x की वैल्यू 2 है तो x 1 होगा, बरोबर है ना. तो ये नंबर, एक नंबर 5 होगा और एक नंबर 3 होगा. अच्छा, difference is 10. Sorry, my mistake. So difference is 10. So 5x minus 3x is 10. So 2x is 10. So x is 5. So ये नंबर तुम्हारा 5 into 5 25 होगा और ये नंबर 15 होगा. अब इसका प्रोडक्ट पूछा है तो 25 into 15. 25 into 10 250 बराबर है, and 25 into 5 125. So 375 should be the answer. Clear? Let's go ahead. So the next sum goes like, a cat takes 5 leaps for every 4 leaps of dog. 3 leaps of dog are equal to 4 leaps of cat. So what is the ratio of speed of cat to that of dog? So मैं पहले cat यहाँ लिखता हूँ, dog यहाँ लिखता हूँ. Speed निकालना है तो मेरे को मालूम है कि speed is distance upon time. So I'll have to find the ratio of distance and the ratio of time. Then I can solve this sum. So first of all, जो dog का 3 leaps है, 3 leaps of dog is equals to 4 leaps of cat. Which means अगर मैं cat is to dog करूँ, cat is to dog is 3/4. Which means the distance that they are covering are in the ratio 3:4. So can I say that the distance is in the ratio 3:4? Now let us talk about time. So 5 leaps of cat takes 5 leaps for every 4 leaps of dog. So let us say t टाइम में cat 5 लीप लेती है तो एक लीप कितने सेकंड में, कितने टाइम में लेगी? t/5 में. और उसी टाइम में वो 4 लीप्स लेता है डॉग, तो एक लीप कितने टाइम में लेगा? t/4 में. तो टाइम में अगर कैट को t/5 लगता है तो डॉग को t/4 लगता है, तो उसका भी रेशियो मिल गया. तो स्पीड का रेशियो निकालना है, तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इसका स्पीड क्या होएगा? 15/t और इसका क्या होएगा? 16/t. टी कट गया. सो कैट और डॉग के स्पीड का रेशियो 15:16 है. ओके, दिस इज द आंसर. सो फर्स्ट आई कैलकुलेटेड द रेशियो ऑफ distance, then I calculated the ratio of time, and then I just multiplied them. Okay, next, the ratio of two numbers is 3:4 and their LCM is 180. The first number is, so two numbers का ratio 3:4 है, उनका LCM 180 है, तो first number मतलब ये 3 वाला पूछा है. So I will assume this number as 3k and 4k because their ratio is 3:4. I will take their LCM. So इनका LCM 12k निकलेगा, तो 12k की वैल्यू 180 दे रखी है, तो k की वैल्यू कितनी होगी? 180/12, 15. So 15 is the value of k. So 45 is this number and 60 is this number. I am being asked the first number, so 45 is the answer. Okay. 3 numbers are in ratio 1:2:3 and half the sum is 18. Ratio of their square is.
तो 3 नंबर्स कौन से रेशियो में है? 1:2:3 एंड उसके जो हाफ, इसका सम एक्चुअली कितना है? इसका सम है 3, 4, 5, 6, राइट? तो इसका आधा सम कितना होगा? 3, और उस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18। एक की वैल्यू कितनी है? 6। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्क्वायर। उनका स्क्वायर का रेशियो क्या होगा? एक की वैल्यू 6 है, तो ये 6 हुआ, ये नंबर 12 होगा और ये नंबर 18 होगा। उनके स्क्वायर का रेशियो क्या होगा? 36:144:324. So this is the answer. Okay, clear. Hello students, this is Alok Gupta, your mathematics mentor and coach at Khyati's EdTech. So I have brought a lot of problems around 120, 130 on ratio and proportion. Please go through it, and if you have any queries, please get in touch with me on WhatsApp or subscribe to my YouTube channel. I'll be getting motivated and I will come with more and more such concepts in near future. Thank you so much.